Morning class. Yesterday we discussed about the new chapter measure of central tendency. Measure of central tendency is divided into some parts, that is mathematical averages, positional averages and commercial averages, and they are also subdivided into other parts. So mathematical averages is divided into arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So according to the syllabus which is provided by the CBSE, we study only about the arithmetic mean. So arithmetic mean also we discussed that there are two types of arithmetic mean. First simple arithmetic mean and second is weighted arithmetic mean. So firstly we discuss about the simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean, we discussed that there are three series under the simple arithmetic mean. First is individual series, discrete series and continuous series. And we always discuss the individual series. And we discussed in the previous lecture that individual series is calculated by three different methods. First is direct method, shortcut method and the step deviation method. So we already discussed the direct method and the shortcut method. So now in today's class we discuss about the step deviation method of calculating individual series, of calculating mean by individual series. Step deviation method. So write down under the step deviation method. Step deviation method further simplifies. Step deviation method further simplifies the shortcut method. Step deviation method जो है हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड पर. इन दिस मेथड, इस मेथड में डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन आर डिवाइडेड, यानी कि जो हमने डेविएशंस फाइंड आउट किए हैं एज्यूम्ड मीन मानकर, ठीक है, आर डिवाइडेड, उसको हम डिवाइड करते हैं बाय अ कॉमन फैक्टर which is denoted by C to get step deviations. Write down the steps of step deviation method. Steps of step deviation method. First is let the items observation be. Let the items of observation be x1, x2, x3 and xn. Okay. Second is decide any item of the series. Decide any item of the series as assumed mean. As assumed mean. यानी कि जो ये सीरीज हमारे पास गिवन है, इसमें से हम किसी भी एक आइटम को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम मीन कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट
Calculate the deviation. Calculate the deviation which is known by D from the assumed mean. From the assumed mean A means that is deduct A from each item of the series. Deduct A from each item of the सीरीज, यानी कि जो हमने आइटम्स में से किसी एक आइटम को क्या किया है, ए एज्यूम किया है, उसमें से हम क्या करेंगे, हर एक आइटम में से ए को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, मींस सबट्रैक्ट करेंगे. सपोज x1 x3 x2 x3 x4 x3 लाइक दिस. नेक्स्ट find out the common factor. Find out the common factor, that means C from D. यानी कि जो हमारी D की वैल्यू निकल कर आई है, डेविएशंस निकल कर आए हैं, उसमें से हम कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. यानी कि जितने भी आइटम्स हमारे D कॉलम में गिवन होंगे, उसका हम क्या करेंगे, या तो एचसीएफ निकालेंगे या किसी भी एक को कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. एंड कैलकुलेटेड D डैश एंड कैलकुलेटेड D डैश, देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, D डैश करेंगे, which is D upon C, which is D upon C. Next, fifth step, take the sum total, take the sum total of step deviation the sum total of step deviation D dash and it denote by sigma D dash. जब हम D dash कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, D dash कॉलम का क्या करेंगे, टोटल करेंगे और उस टोटल को हम सिग्मा D dash के नाम से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट, find out the total number of items from the series. फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सीरीज गिवन है x1 x2 x3 x4 और व्हाटएवर, उसमें से हम क्या करेंगे, उन सब का क्या करेंगे, टोटल करेंगे. मींस कि नंबर ऑफ सीरीज कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और व्हाटएवर. And the last step is applying this denoted by N. Applying the formula that is mean is equal to
a plus sigma d dash upon n into I or C. I is also a common factor and C is also a common factor. Okay, so these are the steps to calculate the mean by the step deviation method under the individual series. So let us understand these steps with the help of example. Write down, calculate the arithmetic mean. Calculate the arithmetic mean of the marks given in example. Of the marks given in example by the step deviation method. By the step deviation method. So these are the students write down the marks which denote by X. 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 means 65. Okay. So the first step is calculate D. D, how we calculate D? X minus A. So let us assume, ठीक है, इसमें से जो हमारा x कॉलम है इसमें से हम किसी भी एक नंबर को क्या कर लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं. सपोज हमने 50 को क्या किया, a मान लिया. So how we calculate the x minus a is 85 minus 50 plus 35. 60 minus 50 plus 10. 50 minus 50 0. 75 minus 50 plus 25. 55 minus 50 plus 5. 40 minus 50 minus 10. 55 minus 50 plus the 5. 70 minus 50 plus the 20. 45 minus 50 minus the 5. And 65 minus 50 plus the 50. So these are the values of column D, which we calculate by subtracting assumed from the marks. Now the next step is D dash. D dash. So how we calculate D dash? D divided by C. यानी कि जो हमारा D कॉलम का अमाउंट है हम उसको क्या करेंगे, C में से डिवाइड करेंगे. C इज अ कॉमन फैक्टर. या तो कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, या तो ये जो भी नंबर्स गिवन है हम इसके क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर HCF निकाल लेंगे, या हम एज्यूम क्या कर लेंगे कि जो भी कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 निकल कर आ रहा है. So first how we calculate 35. The common factor is 5. Okay. So for calculating
डिवाइडेड बाय द d into the c, ठीक है ना। हम d को क्या कर देंगे, c से डिवाइड कर देंगे। सो फर्स्ट 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 0, 25 divided by 5 plus 5 plus 1 minus 2 plus 1 plus 4 minus 1 and plus 3. So these are the values of d dash. Okay. So according to the formula, what is the formula of calculating mean by the step deviation? A plus sigma b dash upon n into I or C. So we know the value of C. C is a common factor. The value is 5. Sigma d dash means the total of the d dash column. So when we add these all the values, 7 plus 2 9, 9 plus 5 14, 14 plus 1 15, 15 minus 2 means 13, 13 plus 1 14, 14 plus 4 18, 18 minus 1 17, 17 plus 3 20. So sigma d dash is 20. Okay. So the value of A which we assume is 50. Okay. A is 50. Sigma d dash, the total of d dash column is 20. Now what is n? N is the number of units which is given in this. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 means n is 10. So the value of n is 10. So with the help of this we calculate the mean in Step-Deviation method. Sigma x is equal to A value is 50 plus sigma d dash value is 20 upon n value is 10 multiply C value is 5. So x mean is equal to 50 plus 2 multiply 5. X mean is equal to 50 plus 10. Mean value is 60 marks. So this is a method of Step-Deviation method to calculate mean under the individual series. Okay. So calculating simple arithmetic mean, there are three series. First is individual series, discrete series and continuous series. So we understand about the individual series. Now we discuss about the discrete series. Discrete series. First is individual series.
Now comes in discrete series. Write down in case of discrete series, ungrouped frequency distribution in bracket ungrouped frequency distribution, comma, values of variable show the repetitions. Values of variables show the repetition, that is frequencies are given corresponding to different values of variables. यानी कि हर एक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज दे रखी होंगी उसकी साथ ही साथ क्या दे रखी होगी, हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। इन अ डिस्क्रीट सीरीज the total number of observation that is n equal to some total of frequency, that is sigma f। यानी कि अब तक हम इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते थे, सारी जितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए होते थे उनको हम क्या करते थे, काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 10 और व्हाटएवर। सो 10 that in individual series the value of n is 10, but now in discrete series the value of n is the sum total of the frequency। यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी होगी उनका टोटल करेंगे, so that is n which is denoted by sigma f। So to calculate mean under the discrete series there are also three methods. First is direct method, second shortcut method, and the third one is step-deviation method। So these are the three methods. With the help of this we calculate mean under the discrete series। So first we understand our direct method। Write down in the direct method various items in bracket x are multiplied with the respective frequency in bracket f, and the sum of product sigma fx is divided by the total of frequency, that is sigma f, to determine simple arithmetic mean। यानी कि वेरियस आइटम x आर मल्टीप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ वेरियस आइटम्स दे रखे होंगे हम सबको किससे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करेंगे। ओके, एंड द सम ऑफ
कैलकुलेट करके जो भी हमारा कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, fx का बनेगा, मींस f मल्टीप्लाई x, ओके। एंड द सम ऑफ कोलेट्स, और जो इस कॉलम का सम होगा, टोटल होगा, दैट इज सिग्मा fx इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या कैलकुलेट निकल कर आ जाएगा, मीन निकल कर आ जाएगा अंडर द डिस्क्रीट सीरीज बाय द डायरेक्ट मेथड। सो राइट डाउन द स्टेप, राइट डाउन द स्टेप of direct method to calculate mean under the discrete series. First is multiplying steps. Multiplying different values of variable with respect to frequency, with respect to frequencies and denoted it by fx. Second is obtain the sum total of fx and denoted by sigma fx. ठीक है, यानी कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यानी कि x कॉलम को हर एक आइटम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारी वैल्यूज निकल कर आएंगे हम उसको किससे डिनोट करेंगे, fx से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी fx वैल्यूज निकल कर आई है हम उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे और उसको हम सिग्मा fx से डिनोट करेंगे। द थर्ड स्टेप इज find out the total number of items. Find out the total number of items in the series that is sigma f or n. फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज वाले कॉलम का सबका क्या करेंगे, तो सबकी वैल्यूज का टोटल करेंगे और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा f से। लास्ट इज फोर्थ स्टेप इज अप्लाइंग the formula. Then at last we apply the formula, that is mean is equal to sigma fx upon sigma f. So these are the steps of calculating a mean under the direct method in discrete series. So let us understand these steps with the help of an example.
following data of the marks obtained by 60 students of a class. From the following data of the marks obtained by 60 students of a class, calculate the average marks by direct method. Calculate the average marks by the direct method. So the marks given is 20, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. And the frequency also given 8, 12, 20, 10, 6, 4. Okay. So first step is multiplying different values of variable, यानी कि जो different values of variable दे रखी है हमें कॉलम x की with respective frequencies, उसको हम क्या करेंगे, जो frequencies given है उनके साथ क्या करेंगे, multiply करेंगे and denoted by fx, और वो किससे denote किया जाएगा, fx means 20 multiply 8 160, 30 multiply 12 360, 40 multiply 20 800, 50 50 multiply 10 500, 60 multiply 6 360, 70 multiply 8 4 280. Okay, so this is the value of fx item by multiplying the marks into number of students. Okay, so according to the formula, okay, according to the step, second step is obtain the sum total of fx and denoted it by sigma fx. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा fx कॉलम है इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, मींस 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 200. So the total is 2460, that is denoted by sigma fx. Sigma fx. Third step is find out the total number of items in the series, यानी कि जितने total number of items frequencies दे रही number of items दे रही इनका हम क्या करेंगे, total करेंगे, इस frequency column का हम क्या करेंगे, total करेंगे. So total करने के बाद जो total आएगा वो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा, that is sigma f. Sigma is the sign of total. Okay, last step is applying the formula. The formula is mean is equal to sigma fx upon sigma f. So the value of sigma fx is 2460 upon sigma f value is total 60. So when we calculate
6 4s are 24 and 6 1s are 6. So the value of mean is 41. So the value of mean is 41 marks. Okay. So this is a method of calculating mean by by the direct method under the discrete series. Okay. So next lecture we continue the shortcut method and the step deviation method. For today it is sufficient. Thank you class.